few after a few happy minds. Pramod, great, lovely. Santosh, Avinash, Rajendra, lovely to see all of you. Ganesh, Prashant. Some of you are so regular ना, तुम लोग के नाम ऐसे मुझे याद हो गए हैं, तुम्हारी शक्लें याद नहीं है, because I've not met you. Many of you have not met you, but then you are there in every Happy Minds, and हर बार तुम्हारा नाम पढ़ते रहता हूँ. And I'm sure somewhere कहीं मिलेंगे तो फिर we will be able to connect much more deeply than what strangers would connect, because you are no more strangers in my life. Namaste Naresh, Anjuman, good to see you. Chandramohan, Makarand. One second, let me just get this adjustment right. Yeah. Namaste. No. Lovely, lovely, wonderful to see all of you. Aditya, I'm not able to take names of everybody because bahut sare namastes aa gaye. So just continuing with wherever I can get my eyes onto the names. Motilal ji, from, I think you're from, aap Calcutta mein hi ho na abhi? Haan ji, good. I think after a few HMs I'm seeing you here. Mahadev, Apurva, Smita, great. Chalo, wonderful to see all of you. Those who have joined in for the first time, welcome to Happy Minds. Jo pehli baar aaye hain, maybe you can just write in the city you're from and you can just type in first. To mujhe malum pad jayega ki aap pehli baar Happy Minds mein aaye ho. And if you're there for the first time, this is a group of seekers. This is a fraternity of seekers who come every Saturday morning at 7 o'clock, and every Saturday morning we are in some kind of a huddle, in some kind of a get together, which is online through the help of technology. और हम एक सीख करते हैं एक रास्ता अपने आप को अच्छा बनाने का. We seek a better life for ourselves, and that's why we meet every Saturday morning. Anji, chalo, good to see you, Makaran from Pune for the first time. We have Sainik for the first time. Wonderful. All those who have joined in for the first time. So uska format kaisa hota hai? The format is that we have meditation, which we start sharp at 7, and that's a beautiful part. I never would say that you miss out on the meditation, and that's something which I look forward to doing with all of you, or being with all of you. After meditation, we have a round of success story sharing, which I'll be sharing soon, and then we have the subject for the day, which I call as weekly shots. So for the week to come, we kind of charge ourselves and get ready, get prepared to handle that week, to take care of the week and to maximize on that week. That's the whole idea. So as a weekly shots milte rehte hain every week after week. This is Happy Minds number, I think, 1162. So 1162 ye Happy Minds hai, and almost around 27 years of conducting Happy Minds. So 27 saal pehle, we started this journey of sharing this time with people from across, from whosoever would come in my life. Last, I think, 3-4 years, we have been online, so the reach has increased to across the country. So one more time, welcome everybody. From Karnataka, we have Shankar Goda. Wonderful. Welcome, Shankar, to Happy Minds. Those of you listening to me for the first time, you can just type in first and the city you're from, so I'll come to know aap log kahan se aaye hue hain. So one thing which I would like to share with all of you, especially the newcomers, we start at 7, so don't miss out on being there at 7, because it's a beautiful time of kind of composing yourself, kind of being one more time to connect with yourself, connect with the energies, with the powers of the creator. तो थोड़ा समय तो मुझे लगता है खुद को देना चाहिए, खुद से कनेक्ट करने के लिए. And खुद का मतलब whatever you understand of yourself. So the meditation ka least meaning could be that you kind of step back from the world which you are in. You kind of step out of the world which you are engrossed in. So सबसे simple तरीका meditation को समझने का है कि it's a way by which you step out, or you step into your life and step out of the life which you are in. Then the other benefit of meditation can be that it makes your mind calm, cool, composed, and you kind of in a better position to take charge of yourself.
And of course, then there are many other benefits. The deeper we go, the deeper we'll understand. For example, if you're there with me in my life, we take you deeper into connecting through the meditation process, where it becomes a tool for us to connect to something higher and something bigger. That's what meditation is. So कभी बैठ के उसको हम लोग समझेंगे कभी समय मिला तो. Anyways, let's start with the success stories for this week. इस वीक का सक्सेस स्टोरी नहीं है ज्यादा. लव लेटर्स बहुत हैं, प्यार भरे प्रेम पत्र बहुत हैं जो मुझे लोगों ने भेजे, एंड थॉट ऑफ शेयरिंग अ फ्यू लव लेटर्स विद यू. एंड अगर याद आती है मेरी किसी को तो मुझे अच्छा ही लगता है कि आई हैव बीन थॉट ऑफ सो लविंगली एंड सो फॉन्डली. So we have the first love letter is from Nimesh Desai, or from Germany. He sends me this. साहब की याद आई in Germany, and बड़ा शायद भाव विभोर हो गए थे जर्मनी में. And he wrote and he says, I'm not who I am without you. Thank you for your kind support and guiding me as and when needed. Please accept my gratitude. I'm doing my daily ritual right from 5:30 a.m. by daily practice, finding myself in very different zone internally. It looks great transformation happening from inside. I believe I have a true realization of small improvements for the larger period making the difference. All this is because of Happy Minds. Listen to you very sincerely in all your programs and from your body language, which always is on a very high level. In fact, my mind always try to copy you what I'm realizing. I can go on and on and on, but itna hi aaj ke liye. So he sent me this beautiful love letter and I said, wow, this is fantastic. तो मैंने मैसेज किया, मैंने कहा बस करो, अब रुलाओगे क्या? So that's how it is. So love you, Nimesh, for sending this beautiful love letter to me. And I don't know if you're there right now in Happy Minds, or you'll be listening to me on YouTube. And again, हाँ, जो लोग YouTube में आए हैं, welcome to Happy Minds. I just missed out on welcoming you. Let's make a great week for ourselves by picking up some beautiful gems today from today's HM. आज का HM पे एक बड़ा अच्छा subject है which I'll be sharing on. How do we create sustainable success? So success तो चाहिए, लेकिन how do we make it sustainable? How can it last for a period of time? तो उस पे हल्की कुछ बातें करूंगा. Let's see if we can pick up some gems for the week to come. And stay alive and stay excited as we go on and we take this journey of the weekly shots. The next love letter today is from Deepak Borade. He says, Namaste sir, getting ready for the Berlin Marathon. This was a few days back which he sent. Enjoying the last few practice sessions. When you give goals to yourself which are very powerful, you become more accountable towards achieving it. And he sends me this beautiful message, and he says, I look forward to having a great experience at Berlin. Love you for keeping the fire alive. I always look forward to grow with you. Love, Deepak. And this is also such a beautiful message that if you can have somebody with whom you can share your growth journey, your success, or what you have decided, maybe your goals, if you can share with somebody. And when you share your goals, you kind of have this in your mind that when I share my goals, I will be given positive vibes. There are times in life when you don't want to share your goals, you don't want to share your aspirations with people around because you're not sure how they will respond to that. And there are times when I have come across situations where people have shared with me that people did not acknowledge their goals in a very positive way. So I always say that you should know, you should understand with whom to share your aspirations. So somebody who can grow with you, somebody who can help you reach to those aspirations, somebody who can bless you to reach to those aspirations. I think उन्हीं के साथ ज़्यादा share करना चाहिए. So when I get a message, whenever I get a message or whenever I get a text from somebody that I have this goal and I'm looking forward to it, or I have this aspiration and I really want to make it a part of my life, I feel so blessed that at least I'm that person with whom they can share, because growth journeys and growth initiatives, you got to share with people who can in some way add on to that. And if somebody is sharing that with you, you also have to ask yourself, am I adding on to that? The least we can do is we can bless. The least we can do is feel happy.
The least we can do is have the person's aspiration in our prayers and say, Bhagwan, iski bhi ye kamna, iski bhi aspiration puri kar dena. I think that's the least we can do. And the more you behave from this pattern, you will see that the more growth stories will come to you, the more growth aspirations will come to you. And that's what Deepak writes, and he says, I look forward to growing with you. Thank you so much, Deepak. Another success, this is not a success story, it's again a lovely, beautiful story, which Vidisha, my colleague, she experienced last week when she went to one of the entrepreneurs event, a program which he had organized, and Vidisha was one of the chief guests there. And in our Arasamasti batch, कल एक note भी लिखा है उस बारे में मैंने. So in our Arasamasti batch, we have this concept which is called building habits. And we give them a tool of 28 days where they got to build certain habits for the next 28 days. So जब विदिशा वहां गई and the event was on, so Adesh जिनके यहाँ विदिशा गई, उनकी wife, she came and she said to Vidisha that Adesh has really started working on himself. एक बात तो अच्छी हुई आपका program join करके, that he has started giving me time, and every day he kind of gives me 10, 15, 20 minutes of time, और वो अपने habit calendar में उसका tick mark हो जाता है कि okay, give time given to my wife. And they both had a laugh, and then she came and she shared, and she said, this is what Adesh's family is experiencing. So the more I thought about it, the more I said, wow, isn't it amazing? Yes, it's a forced activity initially, because this is not a part of your routine. So the whole idea of a habit calendar is to kind of, or the whole idea of a habit is, when you're trying to build a new habit, is you take some actions which are forceful actions. क्योंकि अगर अपने आप होना होता तो अभी तक हो जाता है ना. तो जो आपके अंदर आदतें अभी नहीं है, इसका मतलब वो अभी तक आपकी हरकतों में आई नहीं है. इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने शुरुआत नहीं करी है. तो शुरुआत हमेशा जो है, या अक्सर जो है, वो एक फोर्स्ड एक्शन से होती है. कोई आपको फोर्स कराता है. फॉर एग्जाम्पल, when we were small, you, me, everybody, when we were small, when we were 2-3 years of age, we didn't have a habit of brushing our teeth. Neither did we like brushing our teeth. I, for that matter, I never liked brushing my teeth when I was small. तो लेकिन घर में बड़ों का प्रेशर था, घर में बड़ों की डांट पड़ती थी अगर आपने ब्रश नहीं किया. तो रोज सुबह फोर्सफुली जो है, वो पहले तो माँ जो है उसमें पेस्ट भी लगा के देती थी. वो तो प्यार से पेस्ट लगा देती थी, बाबूजी आके तो मुंह में डाल देते थे कि करो. सो इट वाज फोर्स टू अस. सो एक बार फोर्स हुआ, पसंद नहीं आया. 2 बार फोर्स हुआ, पसंद नहीं आया. 3 बार किया, फोर्स पसंद नहीं आया. ऐसे चलता रहा सिलसिला. और फिर एक दिन क्या हो गया कि that force became a part of our life, and then next morning onwards हमने खुद ही पेस्ट लिया, खुद ही ब्रश लिया, खुद ही लगाया, खुद ही दांत साफ किए. And now look at it, the last so many years, without brushing your teeth, you don't feel like going out in the world. It becomes a part of your life. So every habit which we have with us was once upon a time a forced activity. So when this was shared, that every day he is giving time to his spouse, एक करते 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 क्या होगा, it will become a part and parcel of his life, where without giving time he would feel, अरे यार कुछ तो missing हो रहा है. And wouldn't that be such a wonderful thing, that the husband comes home and he has in his mind, and he has in his entire way of living, that he has to give time. And so one more hidden benefit of the habit calendar, which we have never thought कि ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको. Anyways, so this is a beautiful, lovely success story for today. चलिए, हाँ जी, आप लोग हुए, you're there with me or not, all of you alive? Let me see. जिंदा होने का सबूत दो भाई कुछ. चलो, great. हाँ, सर जिंदा है, ठीक है. जिंदा रहना. चलो, great. आज का subject is in some way a continuation to last week. In fact, every HM is in continuation to the previous HM. And I will take in a few questions today. If you have any questions, you can just put them in the Q&A section there. And if somebody wants to share something, you can take your hand up, and I'll have your mic on.
I'll have your mic on. So मुझे बताना if you want to share something. I had spoken last HM. I had spoken on this concept that something's wrong with my chair. One second. So last HM, I had spoken on this concept that दो तरह के लोग हैं जिनको जिग जिगलर ने डिस्क्राइब किया था, that there are people who are uh, uh, they have a life which is kind of a life which goes unrecognized. जो एक wandering life होती है, where people just come and wander, and as a result of they just coming with a thought, with an existence of wandering, they don't end up creating something meaningful. तो आप देखो ना, चाहे whether it be a workplace हो, चाहे whether it be your friend circle हो या कोई social gathering हो, there are people who come there as wanderers. No, nothing wrong about it. It's your choice. It's their choice as to how they want to be there. So there are people who are like wandering generalities. I mean, they are kind of moving around. Why are they moving around? Because they happen to be there. So there are people in the world, because they were born, they just live their life. They wander around. They don't create anything significant. They don't create something which is meaningful. And as a result, they live a life which is less than ordinary. ये कुछ बड़ा नहीं कर जाते, ये कुछ अपनी जिंदगी से किसी का benefit नहीं कर पाते, because they just happen to wander. And the wandering can happen for entire life. The wandering can happen for an occasion. The wandering can be for a few hours, which you are in. The wandering can happen anywhere, right? Then the other category of people which Zig Ziglar would speak about is that there are people who are meaningful specifics. People who live a life out of meaning. People who have the willingness to create something beautiful around them. So whether they are there in a party, whether they are there in a social gathering, whether they're there in the workplace, they will always push themselves to live a life which will make a difference in some way. The difference can be for a bigger, larger space, or the difference can be for a smaller space. But they don't just come and wander. सिर्फ आके जी के निकल नहीं जाते, वो आते हैं, जीते हैं और कुछ तो डिफरेंस करके जाते हैं. वो आते हैं, जीते हैं और उस समय के लिए, उस क्षण के लिए वो उनके आसपास की दुनिया अच्छी हो जाती है. वो जब जीते हैं एक उस समय के लिए, शायद वो दुनिया जो है आगे वाले समय के लिए भी अच्छी बन जाती है. Because they are meaningful guys. They're not just there wandering. तो आपको ये पूछना है अपने आप से that as individuals, whether it be as family members, as husbands or wives, or whether it be as children, whether it be as team members or entrepreneurs, are we just wandering in our jobs? कि आए हैं बस काम कर रहे हैं क्योंकि काम बोला गया है, काम कर रहे हैं. आए हैं तो जी रहे हैं, सिर्फ इसलिए जी रहे हैं. तो फिर then you are just wandering. आप सिर्फ टहल रहे हो. तो ये टहलने वाले लोग जो है ना, ये कुछ ज्यादा क्रिएट नहीं कर पाते. I happen to be from a hill station. A hill station is where people normally want to come and relax. So I'm from Nainital. So जहां मैं रहता था, मेरे घर के सामने there's a small road, and in the mall road, every evening it would be packed. And because जितने भी टूरिस्ट आते हैं, वो टहलने निकलते हैं. तो टहलने निकलते हैं मतलब क्या है? They have no specific agenda. तो टहल रहे हैं. तो उनके साथ जो वहां के लोकल रेजिडेंट्स वो भी टहलते हैं, टूरिस्ट भी टहलते हैं, टहल ही रहे हैं. सो इन अ रेस्टोरेंट, व्हेन वी हैड अ रेस्टोरेंट देयर इन होटल, तो हम लोग ऐसे रुक करते थे कि भाई टहल रहे हो, आ जाओ कुछ खा लो, मेक इट मीनिंगफुल फॉर अस. तो मुझे वहां कनेक्ट होता है कि बहुत सारे टहलने वाले लोग जो है ना, दे डोंट मेक ग्रेट कस्टमर्स फॉर अस, दे डोंट मेक ग्रेट टूरिस्ट फॉर अस, बिकॉज जो टूरिस्ट होगा दे शुड स्पेंड मनी. दैट्स व्हाट the town people would always feel. आए हो तो कुछ खरीद लो, कुछ खा लो, and that's how you make it meaningful for the people who stay there, for the world which is around there. आप आए और टहल के निकल गए, तो फिर it doesn't make any difference to anybody there. तो वो तो हिल स्टेशन है, आप टहलने आए because that's what you have come here there for. आप रिलैक्स करने आए हो, आप जरूरी नहीं कि आप शॉपिंग करने आए हो या आप खाना खाने आए हो, तो आप रिलैक्स करने आए हो. तो बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया में टहलने ही आए हैं. वो आते हैं एक कोने से और एक कोने में रोड खत्म हो जाती है, निकल जाते हैं. तो उस पूरे सफर में उनके बर्थ से लेके उनके डेथ तक जो टहलना होता है, उस टहलने से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है.
किसी को फायदा नहीं हो रहा है, दुनिया कोई अच्छी नहीं बन रही है, कहीं कुछ अच्छा लेन देन नहीं हो रहा है, कहीं कुछ आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो ये टहलने आए थे, टहल के निकल गए, right? So I'm just saying that Zig Ziglar said, don't be such wandering guys who just wander around. Can you be those guys who can create some meaning around, who can give a meaning to their lives, who can bring a difference, who can leave a legacy in some way? And that is what I spoke last Happy Minds. Anji, somebody had a hand up. If you have some sharing and you can just write your questions on the Q&A side. If you have any questions, I'll answer to that. But I will be able to do that only when I'm through with what I want to share, and if I feel that I would be in a position to answer that at that moment. So yeah, हमने last HM किया, तो इस बार के HM में हल्का सा let's go forward. Let's understand this. So I was speaking about sustainable success. A few days back, I took a session for one of the organizations where I'm mentoring and coaching, and the title of my talk was creating sustainable organizations, and the subtitle was, can we create an organization which is self-renewable? Can we create an organization which is self-renewable? Means वो organization जो है वो खुद renew करते जा रही है, and that is the essence of creating a sustainable organization. So if you were to see a lot of organizations, if you were to see a lot of people with some skill sets, they kind of got success. तो सक्सेस लाना एक बड़ी बात है, लेकिन सक्सेस को सस्टेन करना उससे भी बड़ी बात है. तो जब आप सक्सेस की बात करते हैं, तो सस्टेनेबल सक्सेस क्या है? सस्टेनेबल सक्सेस इज नॉट व्हाट यू चेज. सस्टेनेबल सक्सेस हैपेंस, और सस्टेनेबल सक्सेस इज समथिंग व्हिच यू अट्रैक्ट फ्रॉम व्हाट यू बिकम. आई विल रिपीट अगेन. तो सक्सेस जो है, जो लंबे समय की सक्सेस है, जो एंड्योरिंग सक्सेस है, सस्टेनेबल सक्सेस है, ये कामयाबी चाहे बिजनेस की हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ की हो, ये कामयाबी जो है ये तब आती है जब आप उसको अट्रैक्ट कर पाते हैं. तो ये वो चीज नहीं जिसके पीछे आप भागते हो. So a lot of people are chasing success, and as a result they are not able to get their hands on success because उसको तो आप वैसे भी पकड़ नहीं सकते हो, क्योंकि the real aspect of success is it is something which you attract, कि आप कुछ बन जाते हो और फिर आप कामयाबी को अट्रैक्ट करते हो. तो इसमें बनना बड़ा जरूरी है. So whether it be you're working in a company, so it's not about how much money they're paying you. When youngsters, they come to me, and if any youngster is listening to me who's about to make his career, and if this was given to us when we were in our 20s, this clarity and this knowledge was given to us when we were in our formative years, तो शायद हमारी लाइफ बहुत और अच्छी हो सकती थी कि कोई हमें बोलता या कोई यंगस्टर्स को बोलता कॉलेज में जाके कि डोंट chase an organization which is offering you great salary. But I see everybody. मैं जितने भी youngsters को मैं देखता हूँ, those who are preparing for their masters, जो MBA colleges में admission ले रहे हैं, they are picking up colleges, they are preparing for those colleges based on कि उनका placement कैसा हुआ है. And the placement कैसा हुआ मतलब किसको कितना पैकेज मिला है. अच्छा, इसका 20 लाख का एवरेज सैलरी निकला, ओके, दिस इज अ गुड कॉलेज. इसका 30 लाख का मिला है, इसका दिस इज बेटर कॉलेज. वहां तो 50 लाख से किसी का द एवरेज सैलरी इज 50 लाख रुपीस, एंड दैट्स द कॉलेज आई नीड टू अप्लाई फॉर. एंड नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट आई फील दैट कहीं हल्का सा सक्सेस की डेफिनेशन गलत हो गई. सो व्हाट आर यू चेजिंग? यू चेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज गोइंग टू गिव यू हाई सैलरी. During your formative years, I'm saying chase an organization where you'll become somebody. Because once you become somebody, कामयाबी अपने आप आती है यार. Am I not right? When you become physically healthy and strong, तो वो सक्सेस जो है मैराथन के रूप में क्यों नहीं आएगा आपके पास? आप क्यों नहीं कुछ मैराथन्स भाग लोगे? The success in terms of a disease-free life for a long period of time, वो क्यों नहीं आएगा आपके पास?
because you have become healthy. So if you can bring this concept in your mind. I was talking to one of my relatives last week, and उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि बहुत ही थका हारा जिंदगी का मारा. तो इन कॉन्वर्सेशन मालूम पड़ा कि उसका जो लीडर है, तो उसने बताया कि उसका जो लीडर है, उसका जो बॉस है, his immediate boss or whom he is reporting to, वो आया हुआ है फ्रॉम कनाडा, he has come to India and घूम रहा है इंडिया. तो मैंने कहा अच्छा, नाइस. एंड देन अ सेकंड स्टेटमेंट वाज, मुझे बहुत काम दिया हुआ है एंड I'm handling all the work and all the leadership role which he is playing there. ऐसे तेरे को दुख किस बात का है? उसके घूमने का दुख है या तेरे को लीडरशिप का दुख है कि तेरे को ये रोल करना पड़ रहा है? So then he became silent for some time. I said it's okay. वो अपने छुट्टी, अपना समय, उसको मालूम है ना उसको कब घूमना है. तो it's not because he has given his job to you that वो घूमने गया हुआ है. और अगर ऐसा भी है तब भी अच्छा है कि जो तेरा सीनियर है उसका रोल तेरे को मिला हुआ है ना. Is that not great? That the job of a senior is with you, and if that job you do, you will become your senior. सोचना इस बात को, that it's a great opportunity to become somebody. तो वो maybe initially shut it down होता है, you don't want to listen. He says मैंने तो उसको बोल दिया है. My relative is into coding. Last 20 years of his life he was always into coding. अभी coding से निकाल के उसको leadership का role दे दिया गया. And he's handling people which he's not capable of, and which is maybe he's struggling with that, and he's frustrated. And he says, मैंने उसको बोला अपने boss को कि give me the coder's role. I will play the role of a coder. तो boss ने immediately reply किया from Canada, I will also give you the salary of a coder. So boss is intelligent. He says, I'm not giving you salary of a coder. I'm giving you the salary of a leader. You better behave like a leader. So I said, this is such a wow opportunity for you. तेरे को आज तक जो सारे मौके मिले, सारे मौके तेरे को कोडर के रूप में मिले. अभी तेरे को मौका मिल रहा है to behave like a leader. Do you know what will happen to you after some time? After 6 months, after 1 year, you will emerge as a great leader. Isn't it wonderful? And once you emerge as a great leader, would you not attract success? Would you not attract better and bigger responsibilities? Would you not attract bigger salaries? Would you not attract bigger companies? तो ये बनना बड़ा जरूरी है हमारे. The more we become, the more we will attract success. So if you want to sustain success over a period of time, the first and foremost thing is you got to ask yourself, is the focus on me becoming somebody? As an organization, if you really want to sustain success for a long period of time, it's not a one product wonder कि आपने एक प्रोडक्ट लेके आए और वो प्रोडक्ट चल गया और कंपनी कामयाब हो गई. That's not success. It's a temporary hello. Vidisha, Yes, am I there? you are back now. You I'm had back. got stuck for a second, but you're back. Okay, I'm back. Oh, yes, I love to be back. तो मैं बात कर रहा था from this very perspective. Oh, welcome back. वाह, ऐसे लगा जैसे सदियों के लिए मैं बाहर चले गया हूँ. Welcome back. चलो ठीक है. Great. There was some challenge with the power. मेरे साथ हो के नहीं? Hello, everybody. Great. चलो, stay alive. सांस लेते रहना, बाकी मैं देख लूंगा. चलो ठीक. So I was talking about this concept called sustainable success. खुश कर देते हो सर, हम आपके साथ हैं, तो तुम मेरे साथ ही हो गए. मैं तुम्हें छोड़ूंगा तुम्हें इतनी जल्दी. चलो, great. All of you from wherever you are, stay alive and stay with me. So sustainable success in any organization, you cannot have a one product success कि एक प्रोडक्ट चल गया और कामयाबी मिल गई आपको. So that कामयाबी is a temporary phenomenon. But if you want sustainable success,
तो इसका मतलब क्या है, आपके पास नए नए प्रोडक्ट्स आने चाहिए। अब नए नए प्रोडक्ट्स कहां से आएंगे? तो नए नए प्रोडक्ट्स को बनाने की एक ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करना पड़ेगा। सो यू बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन विच चर्न्स आउट न्यू न्यू प्रोडक्ट्स एवरी नाउ एंड देन। You become an organization which is innovative by nature. You become an organization where a lot of research is happening. You become an organization where leadership is taking charge of identifying what is required in the market. You become an organization where where people are there because they are not just taking care of the present, but they're also focusing on what will be needed in the future. So when you become this, you attract success. लेकिन जब हम बनते नहीं है वैसे, तो फिर सक्सेस भी हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते। सक्सेस ऑलवेज इज लुकिंग फॉर अ ग्रेट होम। सक्सेस भी अच्छे घर में जाना चाहती है और वो ढूंढती रहती है ऐसे घर जो उसको लेने योग्य हो। वो ऐसे ऐसे किसी घर नहीं जाती कामयाबी। तो कामयाबी देखती रहती है, कीप्स ऑन हंटिंग, कीप्स ऑन लुकिंग फॉर द राइट प्लेस टू गो, एंड द राइट प्लेस इज द प्लेस which is ready. So when you become somebody, you attract success. So you become an organization which is capable of sustaining growth for a long period of time. You will attract success for a long period of time. तो इसमें पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हो? Let me share a simple thing which you can do. Analyze your life. जो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बोला है that you got to self renew yourself. You got to keep on renewing yourself. इसका मतलब क्या है? When we say renew करने का मतलब क्या है? आपको अपने पास्ट को मारना पड़ेगा. You have to let go of your past. You have to let go of certain things of who you are. जैसे सांप अपनी खाल छोड़ता है ना, तो अपनी पुरानी खाल छोड़ देता है, फिर नई खाल आती है। वो अपने सेल्फ रिन्यू के एक स्टेट में रहता है सांप। See, from that animal we can pick up this concept that ask yourself that in your communication with all that people, with all those people जो आपके आसपास है, आपके घर के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली है, आपके आपके ऑफिस है, क्या वो कम्युनिकेशन जो आपका हो रहा है, is it getting you the best of results? If not, देन आपको जैसे सांप अपनी खाल निकालता है, वैसे आपने उस कम्युनिकेशन को निकाल के फेंक देना है और एक नया तरीका कम्युनिकेशन का उठाना है। That pattern of communication is not giving you success. You got to renew your communication. And that old communication, you have to now kill it. Just like Toyota killed Qualis and they brought in Innova. In the same way, you got to kill certain aspects of your life. You got to kill certain habits of your life because they are no more productive. They are no more rewarding. शायद एक समय में वो rewarding थे, एक समय में लोगों को वो बात समझ में आती थी, एक समय में लोगों को वो कम्युनिकेशन आपका समझता था। But today the world is different. Your children are no more the same. Your spouse is no more the same. The children, not only they have grown up, but they also have got a different way of understanding life compared to the way we understood when we were their age. तो जब हम बच्चे थे, उनके एज के थे, तो हमारी समझ और आज के बच्चों की समझ में बड़ा फर्क है कि नहीं? तो हमारा कम्युनिकेशन वैसा कैसे हो सकता है? So we got to renew our communication. We got to renew our thought process. And for the renewal to happen, you got to first decide, I'm going to kill this old self of mine. ये जो मेरा पुराना मैं हूं, ये जो मेरी पुरानी आदतें हैं, ये जो मेरी काम करने के पुराने तरीके हैं, ये जो मेरे बात करने के कुछ तरीके हैं, इनको तो मुझे मारना पड़ेगा और फिर नए को बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिन्यू करते रहे, you will have sustainable success as an individual. And when I say sustainable success means you will keep on attracting more and more success because आप नए बनते रह रहे हो। If I were to ask you, हम सबने दवाइयां खाई कि नहीं खाई है, राइट? तो दवाइयों में क्या होता है, पीछे लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, और मैन्युफैक्चरिंग डेट के नीचे क्या लिखा होता है बताओ? हाँ जी,
बताओ क्या लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट के नीचे? Expiry date, absolutely. It's a no-brainer question. कोई रॉकेट साइंस का क्वेश्चन नहीं था, but just wanted to keep you alive and active so that you key in and you listen to me actively. When you don't listen in an active state, you kind of miss out on making your brain more capable of absorbing things. तो मैन्युफैक्चरिंग डेट के नीचे लिखा होता है एक्सपायरी डेट. इसका मतलब क्या हुआ? तो वो मैन्युफैक्चरर कहना चाह रहा है कि अगर आपने ये दवाई एक्सपायरी डेट के बाद ली तो शायद इसका असर नहीं होगा. एक तो वो ये चीज बोल रहा है. एक चीज ये भी बोल रहा है कि शायद इसका कोई गलत असर ना हो जाए. वो दो चीज बोल रहा है कि ये अगर आपने इस तारीख के बाद ये दवाई खाई तो शायद वी डोंट टेक गारंटी ऑफ एनी रिजल्ट्स. और वो ये भी बोल रहा है कि वी डोंट टेक गारंटी, वी डोंट टेक अकाउंटेबिलिटी, वी डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी एडवर्स इफेक्ट व्हिच माइट हैपन ऑन यू और टू यू. ओहो, बड़े शाने हैं ये दवाई वाले. वो एक्सपायरी डेट लिख के उन्होंने अपने हाथ झाड़ लिए साहब. तो वो कह रहे हैं कि जब ये जो 6 महीने का या साल भर का 2 साल का जो टाइम स्पैन दिया है, इसी में इसको इस्तेमाल करो. इसके बाद जो है ये इसको किल कर दो, खत्म कर दो. इन द सेम वे आपके काम करने का तरीका है, उसकी भी तो कोई एंड लिमिट होगी, उसकी भी तो कोई एक्सपायरी लिमिट होगी कि नहीं होगी? कि वही काम करने का तरीका जो है लाइफ लॉन्ग ही चलता रहेगा. तो ये कौन सा तरीका है जो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है? उसका भी तो कोई एंड लिमिट होगी कि नहीं होगी? सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि ये मेरा पैटर्न जो मेरा काम करने का, ये मेरा जो तरीका है काम करने का, इसको मैं अभी अगर मैं इसके एंड एक्सपायरी डेट के बाद भी इसको यूज करता हूं तो शायद इसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है या रिजल्ट नहीं आएगा. और कहीं कहीं तो इस तरीके से उल्टा ही असर हो जाएगा. जो मैं काम करवाना चाहता हूं या करना चाहता हूं वो होगा नहीं और उल्टा नुकसान हो जाएगा. कैन वी नॉट थिंक लाइक दैट? एंड दोज पीपल हु हैव थॉट लाइक दैट, they have been on a constant renewable mode. कि वो बैट्समैन है, उसको समझ में आ गया कि यार अभी तक जो बैटिंग में कर रहा था इससे मेरे शॉट्स में से रन आ रहे थे और मैंने ऐसा 5-6 साल खूब रन बनाए. लेकिन अब मेरी ये बैटिंग की स्टाइल जो है, ये ऑपोजिशन टीम ने इतने मेरे वीडियो देख देख के मेरे हर एक कदम, हर एक स्टांस, हर एक एक्शन, हर एक मूव को इतना पढ़ लिया है. नाउ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं कौन सी बॉल को कैसे मारूंगा, तो अब रन नहीं आ रहे. तो वो समझदार बैट्समैन क्या करता है, वो अपने इस तरीके की बैटिंग को मार देता है और एक नया तरीका निकालता है. क्योंकि उसको समझ में आया कि पुराने तरीके से रन तो नहीं बन रहे, वो तो एक बात है, और दूसरा मैं आउट भी हो जा रहा हूं, उसका एडवर्स इफेक्ट हो रहा है. तो एक नया तरीका निकालता है बैटिंग, एक नया तरीका निकालता है फील्डिंग का. वो प्लेयर एक नया तरीका निकालता है बॉलिंग का. वो रिन्यू करता रहता है और जो जितने लंबे समय तक रिन्यू करते रहेगा वो उतने लंबे समय तक उस टीम में अपनी प्लेस को अट्रैक्ट करते रहेगा. राइट और नॉट? तो पूछिए अपने आप से, ऑल एंटरप्रेन्योर्स हु आर हियर, शायद आपके कस्टमर जो है वो वेट कर रहे हैं कि आप एक नया तरीका लेके आओगे, आप एक नया प्रोडक्ट लेके आओगे, आप एक नया तरीका सर्विस करने का लाओगे, आप एक नया तरीका उनसे डील करने का लाओगे, आप एक नया तरीका उनको सेल करने का लाओगे, आप एक नया तरीका उनको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने का लाओगे. मे बी दे आर वेटिंग एंड मे बी यू हैव द ओल्ड वे which is not making any impact, or in worst cases it is having an adverse impact. If you're a team member, you got to ask yourself why that promotion is not happening, why that increment in the salary is not happening, why I'm not able to make it big in my work career. Maybe what you're offering is the same. What you're offering is not making any impact. Maybe the way you're talking, maybe the way you're leading people, maybe the way you are communicating with people, वो same है.
मे बी द वे यू वांट द वर्क डन फ्रॉम पीपल, उसको करवाने का तरीका भी सेम है। अब आप बोलते हो इधर आ, तो वो आता ही नहीं है, इसका मतलब इफेक्ट नहीं हो रहा ना कम्युनिकेशन का। आप बोलते हो ये काम करके दे दे, वो काम नहीं करता, इसका मतलब क्या है? आपकी दवाई अभी एक्सपायरी डेट के ऊपर चलेगी। सो व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? दैट्स द क्वेश्चन। माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो। इज इट कहीं घंटी बजी नहीं बजी साहब, या एक्सपायरी डेट पे आ गए हो तुम लोग सब? हाँ जी, मैंने भी पुराने लुक को एक्सपायर कर दिया अपने यार, मैं नए लुक पे आ गया। आई एम रिन्यूइंग माई सेल्फ विद दिस न्यू लुक। हाँ, हाउ इज दिस न्यू लुक ऑफ माइन? चलो लेट मी गो ऑन अ फिशिंग कॉम्प्लीमेंट मोड। मैंने भी अपने पुराने लुक को एक्सपायर का यार हो गया, अभी इसका भी अवधि पूरी हो गई है। लेट मी गो इनटू अ डिफरेंट लुक एंड चलो ठीक है। एक ने तो बोला सर आप बूढ़े लग रहे हो, अरे शाबाश, अरे बूढ़े लोगों को अच्छा पैसा मिलता है। ओल्ड लुक वाज मच, वो तो यंगर ठीक है, अपडेटेड। ओ आई आल्सो हैव अ न्यू लुक, गुड। अभी लुक पे बात करेंगे, चलो। कैसे, हाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट वी नीड? तुम्हारा गुरु हूं मैं, कैसे नहीं मालूम पड़ेगा मुझे? चलो एक ने तो कहा अच्छे लग रहे हो, डैशिंग लग रहे हो। ये नालायक कौन है जो बोल रहा है बुड्ढे लग रहे हो? अमित करा तेरी क्लास लूंगा, मिल मुझे अभी तो। वो पिक्चर देखी थी, बुड्ढा होगा तेरा, हाँ। हाँ देखो ये लोग खुश करने आ गए मुझे, चलो। आई लव यू दिनेश। वो कह रहा है लुकिंग झकास सर। झकास में तो कॉपीराइट आ गया है, बोलना अलाउड नहीं है ऐसा। हाँ, वो बोल रहे हैं कुछ हाई कोर्ट का, ही वेंट टू द हाई कोर्ट अपने, अनिल भाई साहब चले गए वहां पर। डैशिंग एंड ओल्ड, चलो ठीक है। You should look dashing. That's more important. So coming back to the subject which I was talking to all of you, I said the whole concept is, can we have success which we attract? And जो हम attract करते हैं ना, it is for a long period of time, because we have become somebody. And for that becoming, you got to keep on renewing yourself. अपने आप को नया 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 करते रहो. For renewing yourself, you have to ask yourself, what is that old thing of mine which has to be stopped? What is that old thing of mine which has to be killed? What is that old thing of mine which is not making sense anymore? तो मेरे अंदर क्या है पुराना जो अब नहीं चलेगा? तो बहुत से लोग ऐसी जिंदगी हो गए हैं कि वो दवाई बन गए हैं कि दवाई खाने से कुछ नहीं हो रहा है. So have you become that paracetamol जिसके खाने से कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है? Have you become that antibiotic जिसके खाने से कोई फर्क नहीं, इनफैक्ट कभी उल्टा नुकसान ही हो जाता है? You got to ask yourself. Absolutely, ये बड़े लोग बड़ी बातें करते हैं. बोलते हैं साहब स्टीव जॉब्स बोलते हैं थिंक डिफरेंट, डू थिंग्स डिफरेंटली. पता नहीं ये शिव खेरा ने बोला, स्टीव जॉब्स ने बोला, किसी भी बड़े आदमी ने बोला, पता नहीं बोला तो सही, किसी ने बोला थिंक डिफरेंटली. हाँ, सो यू गॉट टू इंश्योर दैट, आस्क योरसेल्फ वो क्या चीजें हैं. तो अभी क्या करो अगले एक हफ्ते के लिए, मेक अ नोट ऑफ थिंग्स. नॉट मेक अ नोट ऑफ मेनी थिंग्स, मेक अ नोट ऑफ जस्ट अ फ्यू थिंग्स, कि यार ये चीज की शायद मेरी लाइफ में भी एक्सपायरी हो चुकी है, मेरा ये काम करने का तरीका जो है ना मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये तो अभी ये रिजल्ट नहीं ला. So make a list of 2-3 things, and that's what your weekly assignment is. That's what where the weekly shot lies. That's where the improvement lies. Make a list of 2-3 things which you feel they need to be given up immediately. They need to be expired. They need to be discontinued. तो मैं आज से ये डिसकंटिन्यू करूंगा. मे बी आपके उठने का तरीका, मे बी आपके सुबह उठ के आप कुछ करते हो वो तरीके कुछ हैं. मे बी रात को सोने से पहले आप कुछ तरीके करते हो, नहीं यार ये तो एक्सपायर करने पड़ेंगे, अब ये नहीं चलेगा. मे बी आपके खाना खाने के कुछ तरीके, आपका तो नहीं नहीं यार ये तो नहीं चलेगा,
कि अभी मैं इस तरह से खाना तो नहीं खाऊंगा, आई विल हैव फूड इन अ डिफरेंट वे. मे बी खाना खाने के समय जो आपने चूज किया, नहीं अभी तो यार इस समय में मैं खाना नहीं खाऊंगा. यू डिसाइड anything which you want to kill, you kill it, you throw it in a dustbin, and then only a new thing will come up. So first will come from your decision. आपने क्या decision लिया है? What do you want to kill today? And it's so important, so very important that we identify what is not working for us. We identify what are those products in us which are not creating, which are not making us which is not making us get to success, which is not attracting success for us. क्या वो चीज है, और वो करना बड़ा जरूरी है. सो आज का आपका सबसे बड़ा असाइनमेंट यही है, find ways by which you can make yourself a lot more younger, mentally, emotionally, if not physically. Make yourself younger so that you can attract a lot of success of the future towards you. You have any question on this, what I've spoken so far? Question if you have any. दो क्वेश्चन ना होने के ना बड़े दो ही कारण होते हैं. एक कि सब कुछ समझ में आ गया, दूसरा हम तो सर थे ही नहीं, ओवरहेड ट्रांसमिशन हो गया. ओएचटी बोलते हैं उसको, ओवरहेड ट्रांसमिशन. तो सब्जेक्ट इतना सिंपल था कि ओएचटी होने का तो मतलब नहीं बनता. Subject was very simple for all of us to understand. Vidisha, again one more time, we lost. Am I there or not? Yes, sir, you are there. Okay, great. अभी क्वेश्चन आया है, how to be consistent while rebuilding skill or habit. Just a few days back, the same question was asked, that I intend to do so many things, I'm not able to be consistent. What do I do to be consistent? And I always feel that this is Happy Minds number 1162. I have no bigger example to tell you about consistency. 27 साल की consistency. The ways have changed, the modes have changed. We have taken Happy Minds in big halls, we have taken Happy Minds in small halls, we have taken Happy Minds in the jungle, for a walk. If you were to ask me, last 27 years, there have been hundreds of ways by which we have taken Happy Minds. Whether it be a food-loving Happy Minds where we had breakfast and masti, we had dancing meditations, we have had trekking Happy Minds. So हमने Happy Minds के तरीके बहुत बदले, but Happy Minds हमारा कंटिन्यू होते रहा. तो कंसिस्टेंसी क्या है, मैं आपको करके या मैं आपको जी के बता रहा हूं कि what is consistency. And if you to see in the lives of people, स्टार्टिंग तो है ही प्रॉब्लम बहुत लोगों का, लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम लोगों का है कि स्टार्ट करने के बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाते. तो उसका क्या, कैसे करें कंटिन्यू? तो उसका सबसे बड़ा संतोष जो मैंने किया मैं आपको बताता हूं, जो आपके काम आ सकता है. I feel I never thought I will reach to 1162 Happy Minds. और मैंने काफी बार भी शेयर किया पहले भी. I never think about कि मुझे अभी इसको 1200 HM तक ले जाना है, मुझे 1500 HM तक ले जाना है. मैंने हमेशा कहा मैं अगला HM लूंगा, ये मेरा वादा है, अगला HM तो लूंगा. बिकॉज अगला वाला जो है ना पॉसिबल है, अगला वाला मुझे दिख रहा है, अगला वाला मैं करने के लिए मेरे अंदर काबिलियत है. तो कभी मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट द ओनली वे, बट दिस इज अ वेरी पावरफुल वे बाय व्हिच आई हैव बीन बीइंग कंसिस्टेंट. तो आपको जिम जाना है, तो आपको मालूम नहीं कि अगले 1 साल तक आप जिम जा पाओगे नहीं जा पाओगे, बट कल तो जा सकते हो ना. आज जिम से आप आए, आप कहने कल का जिम तो मैं जरूर जाऊं, क्योंकि कल अपने हाथ में, कल की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखती है, कल के लिए हम तैयारी कर सकते हैं, विच इज विजिबल टू अस. बट मे बी 1 month from now, 6 months from now, 1 year from now, we don't know. But what people do is they take up commitments for a period of time which is so long, so huge,
जो उस समय जोश में आदमी ले लेता है, लेकिन जब उसका माइंड में कहता है, माइंड क्या बोलता है उसका, जुम्मा जुम्मा तूने आज शुरू किया है और तू 1 साल की बात कर रहा है, तो वहीं पर जो है माइंड साथ देना बंद कर देता है। एंड नॉर्मली इट हैपेंस व्हेन यू टेक योर कमिटमेंट्स। होता ना साल के एंड में 31 दिसंबर को आपने चीयर्स करा, दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ हेल्थ, विगर, हैप्पीनेस, दिस ईयर आई एम गोइंग टू मेक अ सिक्स पैक बॉडी, दिस ईयर आई विल गो टू द जिम एवरी डे। एंड वो एक दिन होता है, 2 दिन होता है, एंड देन खत्म। सो व्हाट यू कॉल डू इज, if you really want to be consistent, tell yourself after doing that activity, tell yourself, I will do it next time pakka, and again do it next time, and then next time again make a promise to yourself, I'll do it next time pakka. This is one simple way by which you build consistency in your life. And the second way by which you can build in consistency is you get in somebody from outside to push you into doing that thing. So whether it be a family member of yours, whether it be a professional from outside whom you pay, and that person, because of the money he has got or she has got, will be there. So if you are not into fitness and you are not consistent about fitness, pay money to somebody who will come and knock your door at 6 in the morning and wake you up and shake you up and take you to the gym. That's another way of doing it. लेकिन अगर वो पैसे नहीं खर्च करने हैं तो खुद को वादा करो और नेक्स्ट डे का काम कर दो. These are two simple ways. There can be many other ways also. My question is, as leaders, how can we delegate tasks in different ways? Okay, स्वप्निल, इसका बड़ा सिंपल आंसर है. पहले तुम बताओ तुम कितने इच्छुक हो, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. स्वप्निल, तुम ये डेलीगेशन सीखने के लिए कितने इच्छुक हो? Tell me on a scale of 1 to 10. 10 is the highest and 1 is the lowest. नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा सब. मैंने कहा on a scale of 1 to 10 तुम कितने इच्छुक हो? So he says 10. I was expecting 20 as an answer, because this is such an important aspect of a leader's life, that how do I get work done from people? How do I delegate it efficiently? How do I delegate work in a manner which will ensure the work gets done? और ये चैलेंज सिर्फ तुम्हारा नहीं है स्वप्निल, ये चैलेंज जो है, ये चैलेंज, इट इज देयर with most of the leaders. But what is surprising is that उनको ये समझ ही नहीं रहा है कि उनका पुराना तरीका काम करने का, करवाने का is not working, is not making sense, and they are not willing to pick up another way of getting things done. तो पुराने तरीके को एक्सपायर ही नहीं कर. So तुम इसके लिए क्या करने को तैयार हो, ये बताओ. स्वप्निल बताओ क्या करने को तैयार है? ये अच्छा, ये प्रॉब्लम कब से है तेरे को कि लोगों से डेलीगेट नहीं कर पा रही? कितने दिन से है? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 साल, 2 साल? कब से है ये चैलेंज इन टर्म्स ऑफ, और कब से ये रियलाइजेशन हुआ कि आई नीड टू गेट वर्क डन फ्रॉम पीपल इन अ बेटर वे? फ्रॉम लास्ट 2 years. 2 साल से आदमी तड़फ रहा है. 2 साल से आदमी तड़फ रहा है कि साहब लोग समझते नहीं, लोग सुनते नहीं, काम नहीं करते. मैं कहता हूं ये काम तो उस काम को उस ढंग से नहीं करते, मेरी एनर्जी जाती है, आई एम द वन हु इज डूइंग देम, आई एम द वन हु इज हेल्पिंग देम, इनको रखा क्यों है मैंने? ऐसी ये तड़फ, ये दर्द 2 सालों से चल रहा है. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि तुमने 2 साल से इलाज क्या किया इसका? Were you waiting for an HM to happen, and HM में तुम सोच रहे थे कि एमजी सर को ज्ञान आएगा, ऐसा उनको साक्षात्कार होगा, he will open his eyes and he will realize that स्वप्निल को ये चाहिए और स्वप्निल के लिए वो बात करेंगे? स्वप्निल का प्रोएक्टिवनेस किधर है कि मैं इस बीमारी से पीड़ित हूं, why the hell I don't go to a doctor? अरे हाथ कटता है तो हम भागते हैं डॉक्टर के पास ना. अरे लूज मोशन होते हैं, हम भागते हैं डॉक्टर के पास. कुछ प्रॉब्लम होता है बॉडी के अंदर, भागते हैं डॉक्टर के पास. अरे कुछ लीगल प्रॉब्लम होता है, भागते हैं लॉयर के पास. राइट? कुछ काम करना होता है, हम भागते हैं आर्किटेक्ट के पास. डोंट वी गो टू द प्रोफेशनल्स? तो ये लीडरशिप का चैलेंज है. व्हाई द हेल वी डोंट गो टू अ प्रोफेशनल टू गेट ट्रेनिंग एंड टू गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट लीडरशिप इज? सो स्वप्निल अगर सच्ची में तो दिल से चाहता है कि ये प्रॉब्लम को हैंडल कर पाए, तो आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन, एंड द सॉल्यूशन इज जस्ट 2-3 days अवे फ्रॉम हियर. अब तूने बात कही दी तो मैं तेरे को बात बोल रहा. मेरा लीडरशिप का एक बैच है, 2 दिन का बड़ा सुंदर प्रोग्राम है,
of transforming leaders into better leaders. ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का एक प्रोग्राम है. देखो मेरी टीम ने स्लाइड भी डाल दी, तूने बोला तो मैंने डाल दी. मैं तेरे को कहने वाला नहीं था, लेकिन तूने ही बोला कि सर डॉक्टर साहब मुझे ये दर्द है, तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन बताएगा ना. तो ये प्रिस्क्रिप्शन ये है कि 26-27 को मेरा ये बैच है. अब ये अगर दर्द तेरा जेन्युइन है और तू दिल से चाहता है कि ये दर्द खत्म हो जाए, जो 2 साल से तू जिसके लिए तड़फ रहा है, तो तू कहेगा सर मैं आऊंगा. लेकिन अगर ये दर्द तेरा जो है, दर्द को कुछ लोग ना दर्द बताने की आदत होती है कि दर्द बहुत है, दवाई नहीं खाएंगे, लेकिन दर्द बहुत, तो उनको दर्द का बयान करने की आदत पड़ जाती है. अगर ऐसा है तो फिर मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं है. बट अगर ये जेन्युइन पेन है तेरा, where you really want to work on your leadership skills, where you really want to work on your delegation skills, where you really want to make your team productive, where you want to enhance their productivity by almost 50%, where you want them to become better leaders, then कुछ तो सीखना पड़ेगा, कुछ तो नया करना पड़ेगा. So the question is, but sir वो डॉक्टर ना पैसे लेता है सर, वो डॉक्टर फ्री में नहीं करता. फ्री में कर ले भाई डॉक्टर के पास तो मैं चले जाऊं, फ्री में एचएम में हो जाए तो मैं कर लूं. ऐसा होता नहीं राजा. मुझे बता दे कौन सा डॉक्टर ऐसा है जो फ्री में इलाज करेगा? और फ्री का इलाज तो बहुत लंबी लाइन लगती है, बहुत बात नंबर आता है कभी. सो इन्वेस्ट सम मनी ऑन योरसेल्फ, राइट, एंड मेक योरसेल्फ अ बेटर लीडर. दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, not only for Sapni but for all of you. But coming back to the subject here is, if you really want sustainable success, you got to understand success is something we attract. How do we attract success? By becoming someone. How do we become someone which is capable of attracting success? By constantly renewing ourselves. हम अपने आप को नया 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 करते रहें. How do we renew ourselves? Identify what needs to be killed in us, what needs to be stopped in us, what needs to be given up in us. उसको आइडेंटिफाई करो और उसके रिप्लेसमेंट के लिए कुछ नया नया लेके आओ. जब आप नए 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 होते जाओगे तो आप कुछ नया नया अट्रैक्ट करते जाओगे, and that is how you will sustain success over a period of time. So this is what I had to share with all of you this very HM. I'm sure some wonderful takeaways for you to make your life much more powerful. ठीक है? एंड करो, अपने पे काम करो. कभी वो काम कोई किताब पढ़ के हो सकता है, कभी कोई किताब वो काम किसी प्रोग्राम को ज्वाइन करके हो सकता है, कभी इन्वेस्टमेंट करके हो सकता है, कभी विदाउट इन्वेस्टमेंट हो सकता है. बट वॉट एवर यू डू, मेक श्योर you become a lot better than what you were. Make sure you become a better version of yourself. You renew yourself again and again and again. Next week, I'll share with you how do we become more wise and not become otherwise. Next week, I will take that subject for you. It's a beautiful subject. How do we become wise and not be otherwise? चलो उसमें बात करेंगे. So till then, make a great life for yourself, and I'll see you much more enlightened and much more powerful than before. Okay? So with this weekly shot, make a great life for yourself. चलिए, and do come with some questions. यार questions लेके आया करो, कुछ sharing लेके आया करो, कुछ. Don't be just mute spectators there. Come with some active listening, active sharing, active participation. तो फिर कुछ हंगामा करेगा ना HM में. Otherwise, it becomes a one-way dialogue. I'm just speaking and you are listening there. तो कुछ तो sharing ऐसी करो जिससे, या कुछ questions पूछो जिससे हल्का सा dynamism आए. चलिए, God bless you all. I'll see you next HM. Love you for being there. Chalo, make a great life.